काली हम पढ़िथिले president. Okay, he is the head of the state. So similarly you will see governor is the administrative head, okay, executive head of state government. Okay, तो ये start करवा हमें कि मु जोटा हाइलाइट करी तुम भी ताको हाइलाइट करो, इंपोर्टेंट मार्क करो. ओके, पेंसिल धरिकी बस अंडरलाइन करो. The Constitution of India envisages the same pattern of government in the state as in the center. Okay, तो जो पैटर्न रो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर जो पैटर्न रो गवर्नमेंट आमे सेंटर रे रखछंती सेम पैटर्न रो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करूची इवन इन द स्टेट. ओके, so this is the parliamentary system, okay, of the government that we have in the center and we have in the state. Okay, सेठी हमर पार्लियामेंट अछि, एठी हमर स्टेट लेजिस्लेचर अछि. ओके, पार्ट 6 पार्ट 5 रे हमें पढिथिले एग्जीक्यूटिव बॉडी जते कि हमर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ए सब अछि पार्ट 5. तो व्हेन इट कम्स टू स्टेट इट इज पार्ट 6 मन रखो. ओके, स्टेट रो जहा बॉडी हम पढिबा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, okay, high court, governor, all these things will come under part 6. Okay, it is important of the constitution which deals with the government of the state. Okay, part 6 deals with the government of the state, part 5 deals with the government of center. Okay, then article 153 to 167 देखो एटा एक्चुअली ब्रॉडली तुम मन रखि थाओ जेमिति कि तमे सेंटर पय मन रखछो आर्टिकल समवेयर फ्रॉम 90s टू जते भी अछि मोर मन नै सेमतिया मन रखो एतिकी होची स्टेट वाला आर्टिकल. ओके, ताकि देखो कोन कि तमर जदि एग्जैक्ट भी मने नाही गोटे क्वेश्चन अछि प्रीलिम्स रे किछि गोटे सेंटर रो किछि गोटे रिलेटेड क्वेश्चन अछि सेइथरे गोटे आर्टिकल दे देछि दिस आर्टिकल आई मीन ए आर्टिकल टा याकु रिप्रेजेंट करूछि. तुम जदि जानिछो जे ब्रॉडली भी जानिछो जे एतिकी आर्टिकल स्टेट बिलोंग करूछि. ओके, 153 रु 167 आर्टिकल होछि बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट. तो एथिरे आउ किछि रहइबनि जदि एथ्रु को गोटे आर्टिकल से ऑप्शन रे अछि तुम एलिमिनेट करि परिबो. एमति भी आसे बेले बेले. ओके, इट्स एमति नाही जे रैंडम माने एग्जाम एकदम क्लोज आर्टिकल ही सब बेले पचारन सेमति भी नाही. ओके, जदि सेंटर रो कोटे रिलेटेड कोन जिंस अछि सेथिरे स्टेट रोड आर्टिकल मेंशन हिच तो तुम जानि परिबो ब्रॉडली जे 153 टू 167 उतरे स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड सब जिंस अछि. तो एथिरे एटा इलेक्शन कमिशन को हेइ परिबोनी कि एटा आउ किछि भी एथिरे हेइ परिबोनी. तो तमे ऑप्शन एलिमिनेट करि परिबो. ठीक अछि. So article 153 to 167 and part 6. Okay, this belongs to state government. Okay, in the constitution which deals with the state executive. Then आमे पढ़िथिले सेंटर रे एग्जीक्यूटिव बिलोंग किए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे आछुंदी प्रेसिडेंट. ओके, देन हमर थिला सिटी प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन थिला हमर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एठी हमर आसीबे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल. ओके, सेम थिंग कहल ना तुम जदि प्रेसिडेंट जतला चैप्टर को रिवाइज करिवो ना सेतले गवर्नर चैप्टर को भी रिवाइज करिवो ताहले तुमको कंफ्यूजन आसीबोनी बेसी. ओके, मन रखिया पे इजी हबो. तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे किए अछंती सेम लोक स्टेट रे जो मान अछंती से माने स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक अछि. एंड देयर इज सेंटर आउ जने थांती कि वाइस प्रेसिडेंट. ओके, एडी जेहेतु कि वाइस गवर्नर नाही स्टेट रे सेथिबे स्टेट रे कि वाइस गवर्नर कहि एग्जीक्यूटिव बॉडी रे नाहंती. तो सेंटर रे कि आसीबे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल. हैला, स्टेट आसीबे कि गवर्नर, देयर इज नो वाइस गवर्नर, सो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, देन एडवोकेट जनरल. करेक्ट, एवला तुम मन रखियो. They are the executive body. Okay, the governor then the governor is the chief executive head of the state. Okay, जेमिति कि प्रेसिडेंट थिले सेंटर रे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड सेमतिया स्टेट रे होचंदी गवर्नर होचंदी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड. एंड सेंटर रे थिले ही इज आल्सो द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. हियर आल्सो गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. ओके, एठी रियल एग्जीक्यूटिव की चीफ मिनिस्टर, सेट रियल एग्जीक्यूटिव की थिले प्राइम मिनिस्टर. ओके, he also act as an agent of the central government. बट एक्चुअली देखो ए स्टेटमेंट बेले बेले देई थाए कोन ऑप्शन रे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन दैट ही इज द एजेंट, बट यू नो कि गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, आमे जानि छंती गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक्चुअली ही इज नॉट द एजेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड ही हैज
dual role. Therefore, he has dual role. He acts as an agent and he acts as an executive head of the state also. Okay, state government. हाँ आउ कौन थिला सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूर्व थिला कौन 1956 पूर्व कौन थिला a one person cannot be governor for two states. Okay, after seventh constitutional amendment act 1956 कौन करिछि कि one person can be appointed as a governor for two states. Okay, maybe तुम देखिथिबो बेले बेले थाए बिहार रो गवर्नर ही इज आल्सो द गवर्नर ऑफ झारखंड. ओके तांकु दीटा स्टेट रो चार्ज दिया थाए अनलेस अंटिल यू अपॉइंटेड another person for the government governor of another state. Okay, तो जणे पर्सन दीटा स्टेट रो गवर्नर हे परिबे. Right, this is also important you remember एभळा statement से माने पचारंती. Okay, a single person cannot be a governor for two states. This is wrong. Okay, this is also important. One person can be governor for two states. Then appointment of governor केमिति appoint हुअन्ति तमे जानिछ तांको किछि vote किछि हुएनी. Neither he is directly elected nor he is indirectly elected. Okay, president was indirectly elected. हमें पढ़ले president is indirectly elected but governor is not at all elected. He is appointed by the president under his hand and seal. Okay, by a warrant under his hand and seal. Okay, and held the he was the nominee of the central government, but as held by Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the central government. It is an independent constitutional office. Okay, and is not under the control or subordinate to the central government. Okay, आमे पूर्व पैराग्राफ रे कोन पढिथिले कि he acts as an agent like agent of central government. But Supreme Court कोन कहूछि according to constitution it is an independent constitutional office. Governor's office is an independent constitutional office and he is not under the control or subordinate to the central government, right? Then okay, then se kemiti nominate hochandi kon hochandi, this is not very important. Okay, and amara governor hochandi like Canadian model. Okay, not like US model. Canadian model le kon hue where the governor of the province is appointed by the governor general and was accepted by the constituent assembly. Okay, US re kon hue where the governor of state is directly elected. Okay, US रे governor directly elect हुए state रा, but we adopted the Canadian model where we are appointing the governor which is accepted by the governor general in USA here by the central government. Sorry, in Canada here by the central government. Okay, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ତାକୁ appoint କରନ୍ତି which is accepted by central government. Central government ही appoint କରନ୍ତି indirectly. देन तांकर क्वालिफिकेशन कौन रहा दरकार. प्रेसिडेंट रो आम क्वालिफिकेशन देखिथिले कि तांको 35 years of age होया दरकार. Then he should be a citizen and he must be eligible to be elected to the Lok Sabha, right? And no office of profit. एडी कौन गवर्नर केस रे he should be a citizen of India. He should have completed the age of 35 years. Okay, but there is no condition कि he must be eligible to be elected to the state legislative assembly or parliament or anything. Okay, there are only two conditions कि से citizens of India हिथियार अछि. एति तमे difference मन रखो. There was another condition for president कि he must be eligible to be elected to the Lok Sabha. Here no such condition is there for governor. Only age 35 years and citizenship Indian citizenship. There are two conventions. Conventions means agreement. Okay, कि गोटे आमे माने the parties are agreed to certain things कि he should be an outsider. Okay, he should not be from the same state. For example, a person from Odisha should not be the governor of Odisha, and while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned. Okay, for example, ଆମର जे governor ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର appointment time रे president should consult our chief minister. Okay, and he should not be from our state itself, right? These are two conventions. Okay, माने just agreement के हमें या को follow करिवा कोई. Then condition of governor office same आम पढ़िथिले president ପାଇଁ कि सी office of profit होल्ड करू नथिबे, सी कोनोसी मेंबर हे नथिबे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो जदी हेथिबे तांको छाडियार अछि. The day he enter the governor's office he has to leave all this his what membership in either in parliament or state legislature. Then he should not hold any office of profit. Okay, he is entitled to stay in the governor's house without rent. Okay,
then he is entitled to allowances, emoluments and privileges, all these things. Okay, एवडा just तमे go through हेजिवो, these are not very important. तांकु कोन कोन अछि माने once somebody becomes a governor, what are the facilities he has given, and what are the things, I mean the conditions that he should not do this and do that. Okay, one is office of profit, and another is he should not be a member of either parliament or state legislative assembly. If he is or she is, then he has to leave the membership once he enter the governor's house, right? Then ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ରାଜଭବନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ वगैरह ଅଛି। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ थिंग्स। Then oath. Okay, president was also given oath by whom? President को किए oath दियंती? Chief Justice. Chief Justice of India, right? Supreme Court. Okay, here also similarly, the oath is administered by the Chief Justice of High Court. Okay, of the concerned state. माने आमर जी गवर्नर सी तांको oath किए दबो? Chief Justice of Odisha High Court. Okay, और तांकर absent रे senior most judge of the High Court, right? Then term of governor office. Okay, we know it has he or she has 5 years term. Okay, this term of 5 years is subject to the pleasure of president. Okay, pleasure of president माने मैं कौन कहती काली कि president can remove you anytime. Okay, you have the 5 year term, but it is not like president cannot remove you without some kind of criteria. There is no criteria. President can remove you whenever he is think that you are unfit or there is the condition. Okay, तो प्रेसिडेंट रो प्लेजर रे रुहंती सीए, तो प्रेसिडेंट तांको केतळे भी चाहिले रिमूव करि परिबे। ओके, एंड द अदर थिंग इज ही कैन आल्सो रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट जतळे रिजाइन करंती काहाकू से रेजिग्नेशन लेटर दियंती? If president Vice President. vice president, right? But here you remember governor will give his resignation letter to the president. Okay, there is no vice governor in state, and also he will not give resignation letter to chief minister. Okay, this is a mistake lot of people will do. You just remember, this is important, whenever governor will resign, he will give resignation letter to the president. Okay, because president appoints him, like that. You just have to remember. Okay. Then Supreme Court held that the pleasure of the president is not justiciable. Okay, that I mean, the governor cannot go to court against the removal of that governor post by the president. That is called as justiciable. Justiciable means when you can go and challenge the decision of the president. Okay, you cannot go and challenge, so it is not justiciable. The governor has no security of tenure and no fixed term of office. Okay, if you are a governor, the term is 5 years, but it is not fixed because you are under the pleasure of president. Okay, president can remove you whenever he wants. Okay, that's why there is no fixed term of office. Okay, the constitution does not lay down any grounds upon which a governor may be removed by the president. Okay, this is also important. You just remember that there is no such ground mentioned by the constitution for the removal of the governor. Okay, president ko pai gotte ground achi. What is that ground that president can be removed? Impeachment. No. Impeachment is the procedure. Violation of the Constitution. Violation of Constitution. Violation of Constitution. तो सेमतिया गवर्नर ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ओके, कि ए ग्राउंड रे तमे तांको बाहर करि परिबो। देयर इज वन ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट, देयर इज नो ग्राउंड फॉर गवर्नर। ओके, दीज आर द डिफरेंसेस यू हैव टू रिमेंबर। And same thing, president also can hold his office beyond his term of 5 years until there is no successor. So similar thing is also for governor. Okay, he can also hold the office unless and until there is a successor. Okay, then एगोटा बाकी जिनस तुम देखिबो। Then we will go to the power and function of governor. Okay, same thing we have studied for president also: executive power, legislative power, financial power. But there are some extra powers for president. Okay, like military power. Okay, then we have ଆଉ कोन power थिला president ପାଇଁ जोडा governor ପାଇଁ नाही? Diplomatic power.
Military power. Military, diplomatic, all these powers are exclusively for president. Okay, not for governor. Governor has only these powers: executive, legislative, financial, and judicial. Okay, same powers, there is no difference. Whatever you have studied for president, exactly same thing governor has. Okay, केवल टिके टिके डिफरेंस अच्छी, एक्स्ट्रा कोड किछि अच्छी देख, प्रेसिडेंट को पाई दिस पावर इज नॉट देयर. ही गवर्नर हैज दिस पावर कि ही कैन अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha. Okay, only these four states. You just remember. The governor can appoint tribal welfare minister in the state of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha. Four states. This is important. You just remember. Okay, because they are tribal dominated states, right? So governor has the power to appoint tribal welfare ministers. This is important. जोड़ा important mark करिछि, बाकी जोड़ा same, no need to I mean आमे ताकू repeat करिवा नै एठी. Okay, then एटा भी president can impose president's rule. Okay, similarly governor can recommend the imposition of constitutional emergency in a state to the president, which is called as president's rule. ओके, प्रेसिडेंट को बाहर कौन पावर थिला? नेशनल इमरजेंसी. गवर्नर को बाहर कौन पावर अछि कि ही कैन रिकमेंड द imposition of, he cannot impose, he will recommend to the president for the imposition of constitutional emergency in a state. Okay, which is called as president rule. President only can impose, just remember, governor cannot impose the emergency in a state. Okay, he will have to recommend it to the president. This is also important, this you have to mark. Then he act as a chancellor, this also you know. Okay, सी सब जते स्टेट रे यूनिवर्सिटी थांती, दिस इज ए एक्स पोस्ट फैक्टो पोस्ट. ओके, सी वर्चुअली से मानकर चांसलर हेक रहंती. जी गवर्नर रहिबे सी हमर जते स्टेट यूनिवर्सिटीज अछंती. ओके, तांकर सी एडा होची एक्स ऑफिशियो पोस्ट, सी तांकर यूनिवर्सिटी रो चांसलर हेक रहबे. एटी होची एक्स्ट्रा, बाकी ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर. ओके, लेजिस्लेटर सेठी भी जेमति हमर थिला पार्लियामेंट रो प्रेसिडेंट होचंती गोटे इंटीग्रल पार्ट. Here also state legislative assembly ro governor होचंती गोटे इंटीग्रल पार्ट. ओके, गवर्नर, देन हमर रहला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जो स्टेट रे अछि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, एटा गोटे सेपरेट पावर तांको अछि. ही नॉमिनेट्स 1/6 member of the state legislative council. Okay, from amongst the persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement, and social services. Okay, एथिरु सी 1/6 member appoint करि परिबे, nominate करि परिबे, sorry, to state legislative council. जो स्टेट रो अछि, हम ओडिसा रे नाही. ओडिसा हैज proposed. Okay, ओडिसा propose करछि पार्लियामेंट को कि हमर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना जाऊ, बट ए पर्यंत ओडिसा रे नाही. ओके, ओडिसा रे केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अछि, बट देयर इज नो काउंसिल. ओके, जो स्टेट रे काउंसिल अछि तार 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करि परिबे. ओके, देन एडा में काली भी पढ़िथिले, या तो आई थिंक इमरजेंसी चैप्टर रे पढ़िथिले. ओके, कि रिजर्व करि परिबे से किछटा बिल. ओके, गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एडी भी शेयर लिखाई छी. ओके, कि को कंडीशन रे से रिजर्व करे बिल अगेंस्ट द, इफ ए बिल इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, or if the bill is opposed to the DPSPs. Okay, or it is against the larger interest of the country, or of grave national importance. A related किछि भी bill जदि state legislative assembly रे आसुछि, then governor is entitled to reserve those bills for the consideration of the president. And procedure हम जानिथिले कि गोटे होचंदी कोन, आइदर प्रेसिडेंट तांकू विथहेल्ड करि परिबे, कंसेंट देई परिबे, एंड रिटर्न करि परिबे. जदि रिटर्न बिल स्टेट को आसिला, पुणी पास है कि प्रेसिडेंट को पाखु गला, देन ही इज, आई मीन दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द बिल. ओके, प्रेसिडेंट चाहिए तांकर असेंट देई परिबे, परमिशन देई परिबे, न देई परिबे, इवन इफ रिटर्न जदि गला. ओके, फाइनेंशियल पावर सेम थिंग, बजेट प्रेजेंट करिवे. ओके, मनी बिल को सी इंट्रोड्यूस हवा आगु प्रायर रिकमेंडेशन निया जिवो गवर्नर, जेमति कि सेंटर रे होतिला. मनी बिल इंट्रोड्यूस करिया आगु प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन निया होतिला, प्रायर रिकमेंडेशन. ओके, एठी गवर्नर सी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि बजेट प्रेजेंट करंती. ओके, ये प्रेजेंट करिवे स्टेट
आमर विधानसभा रे गवर्नर ओके देन डिमांड फॉर ग्रांट्स तांकर बिना प्रायर रिकमेंडेशन रे किसी डिमांड हो पारिबनी ग्रांट्स पई ओके देन कंटिजेंसी फंड जोड़ा कि इमरजेंसी फंड सेठू भी एडवांसेस जहाँ भी दरकार हो सेटा गवर्नर अलाउ करिवे ओके देन फाइनेंस कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन ओके सेम थिंग व्हाट एवर this all these things were available to president also in center okay then judicial power ame पढ़ी सेठी pardon okay he can grant pardon reprieve respite remission and punishment of or suspend okay remission of punishment or suspend and this commute a power of president ko thila similar meaning similar thing for the governor also there are only few exceptions okay कि सीए डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग करि परिबे कंप्लीटली पार्डन करि परिबे नाही गवर्नर ओके मिलिट्री जोड़ा कि हमर कोर्ट रो डिसीजन को गवर्नर किसी ता ऊपर डिसीजन नहीं परिबेनी ओके एमतिया दि तीनटा छाडले बाकी सेम थिंग फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आल्सो ओके आउ कोन इठी अछि एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर पढि ताको हम देखि देबा ओके गवर्नर is consulted by the president while appointing judges of the concerned high court okay while appointing the judges of supreme court no governor is consulted but while appointing the judges of state high court governor is consulted by the president okay next he makes appointments postings promotions of district judges in consultation with the state high court okay district judge manangara posting appoint सब करंदी से with concerned high court ro consultation रे then he also appoints person to the judicial service of the state right these three are separate I mean obviously oda state ro hochi to eti governor consultation rahbo then एटा हमें पढ़ी थिले प्रेसिडेंट और गवर्नर विथ रिगार्ड्स टू मनी बिल कार सेम पावर ओके केवल एटी कोनटा एक्स्ट्रा हबो कि गवर्नर किछरा बिल रिजर्व करि परिबे ओके से रिजर्व बिल टा को से प्रेसिडेंट को पाको पठेबे बाकी एवरीथिंग हैज सेम money bill case रे भी दिजन जगर power almost same only thing is certain money bills will be reserved by the governor for president right ordinance making power एटा भी हम देखिथिले जतला सेशन न थाए ओके जेमति का पार्लियामेंट रो सेशन जतला न थाए सेतला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थ्रू रे ऑर्डिनेंस थ्रू रे किसी लॉ बनै परिबे प्रेसिडेंट सेमिति जतला स्टेट रो सेशन न थाए ओके सेतला गवर्नर बनै परिबे सर्टन केस अच्छी किछिटा केस एठू आस कि governor cannot make ordinance without the instruction of the president in these cases okay एटा किछि एक्सेप्शन अच्छी दि तीनटा केस देखि दबो जस्ट एडी ओके if a bill containing the same provisions which would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state law जो माने एमितिया किछि बिल अच्छी फॉर एग्जांपल मनी बिल ओके जो थिरे कि प्रेसिडेंट रो प्रायर रिकमेंडेशन दरकार से बिल गवर्नर कैनॉट ब्रिंग थ्रू ऑर्डिनेंस ओके जो बिल पाई कि प्रेसिडेंट को प्रायर परमिशन दरकार से बिल को गवर्नर ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनी परिबेनी बुझिलो देन सेकंड इफ यू वुड हैव deemed it necessary to resolve a bill containing the same provision for the consideration माने जो बिल ला तांको लागिवो कि मु ए बिल ला रिजर्व करिथांती प्रेसिडेंट को पाई से बिल ला ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनिया पे स्टेट मते कहूछ देन ही आल्सो विल नॉट ब्रिंग दैट बिल थ्रू ऑर्डिनेंस थर्ड इफ एन एक्ट okay of the state legislature containing the same provisions would have been invalidated without receiving माने इमिति किछि जिंस स्टेट गवर्नमेंट आनिया पे चाहूची जोटा कि प्रेसिडेंट को पाखु जाइथिले सेटा को इनवैलिड कर दै थांदे सेटा को हमें ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनिया पे चाहूचंदी तो सेटा भी से करिवेनी ओके सो थ्री एक्सेप्शंस कोन कोन जोटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल माने किछि प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन दरकार थिला ए बिल पई सेटा ऑर्डिनेंस थ्रू रे आसीबोनी जोटा कि किछिटा जिंस अछि बिल रे जोटा कि प्रेसिडेंट को पाखु रिजर्व माने गवर्नर रखि थांदे रिजर्व करिकि प्रेसिडेंट को पाखु पठै थांदे सेटा भी आसीबोनी आउट जोड़ा अच्छी जोड़ा कि प्रेसिडेंट को पाखु जाइथिले सेटा को इनवैलिड कर दै थांदे सेटा को भी से ऑर्डिनेंस थ्रू आनिबेनी बाकी सब जिंस व्हिच इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ही कैन ब्रिंग थ्रू ऑर्डिनेंस ओके सेम पार्डनिंग पावर मु तुमको देखैली हला गवर्नर कोन करि परिबेनी ही कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस मु तुमको कहली गोटे डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली फ्री करि परिबेनी गवर्नर ओके प्रेसिडेंट चाहिए जेम तमु गाली कहथली राजीव गांधी मर्डर केस रे जो मान कन्विक्ट अछंती
ओके तांकू एबे पार्डनिंग पावर पे रिक्वेस्ट कराई प्रेसिडेंट को बट सिमिलर थिंग गवर्नर कैन नॉट डू ओके ही कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस पार्डन मीन्स कंप्लीटली फ्री कर दवा जाए है even if a state law prescribes for death sentence the power to grant pardon is lies with president okay जदि state government रो या तो state रो को law for example हमरो एबे जो अच्छी sexual harassment case रे okay rape case रे जो death sentence अच्छी जदि जण को मिलुची ताकू भी पालन करिवार पावर केवल प्रेसिडेंट पाखरे ही अछि ओके जदि आम स्टेट फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन टा या कहूची जदि आम स्टेट फॉर एग्जांपल एबे तेलंगाना स्टेट महाराष्ट्र स्टेट किछि किछि करिसंदी सेमानकर निजर स्टेट रो लॉ अछि ओके इन केस ऑफ रेप केस एंड ऑल कि तांके तांको डेथ सेंटेंस दे पारिबे तो से केस रे भी जदि जण को डेथ सेंटेंस मिलुची ताकू पार्डन करिवार पावर केवल प्रेसिडेंट पाखरे अछि ओके ताकू कोन करि परिबे गवर्नर सस्पेंड करि परिबे रेमिट करि परिबे कम्यूट करि परिबे ओके डेथ सेंटेंस को बट पार्डन करि परिबे माने तार डेथ सेंटेंस को कमे परिबे के दिन पय स्टे करि परिबे ओके टाइम को बढ़े परिबे एवडा करि परिबे कंप्लीटली ताको फ्री करि परिबे राइट आउ कोर्ट मार्शल केस जोटा हम तुमको कहली मिलिटरी कोर्ट ओके मिलिटरी कोर्ट रे जदि जण को किछि पनिशमेंट मिलिछि ता ऊपर भी कोनोसी जजमेंट गवर्नर दे परिबेनी दिस पावर इज गिवन टू प्रेसिडेंट ओनली ओके दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एटा हम जहां देखिथिले एठी भी तीनटा आर्टिकल अछि ओके देयर मस्ट बी ए गवर्नर एंड देयर मस्ट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल दिस थिंग्स यू रीड देन डिस्क्रिशन ओके मु जेमति काले हम कहथिले कि प्रेसिडेंट कर किछि भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाही ओनली ही हैज सर्टेन सिचुएशनल डिस्क्रिशन ओके सिचुएशन डिस्क्रिशन कोन जदि किछि पार्टी मेजॉरिटी रे आसु नांती देन ही कैन अपॉइंट ए प्राइम मिनिस्टर okay then he can dissolve the lower house of the parliament if there is no I mean no party has majority e tin di tinta tankar constitutional situational discretion achi sorry okay but governor has certain constitutional discretion okay constitution has given certain discretionary power to the governor so he can take independent decisions in these cases okay कौन कौन से उड़ा रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तांकू जो भी बिल लागिवो जे मुएडा प्रेसिडेंट पाखु पठाया कथा से पठे परिबे ओके दैट इज हिज डिस्क्रिशन पावर ही इज फ्री टू टेक दैट डिसीजन सेकंड रिकमेंडेशन ऑफ द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल तांकू जेतेले भी लागिवो कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनुसार चलिनी या तो सेंटर रो किछि डायरेक्शन को वायलेट करूची देन ही कैन रिकमेंड to the president for the imposition of president rule that is purely his discretion okay while exercising his function as administrator of an adjoining union territory okay जेतले से धरबे जी अछंती कि हमर महाराष्ट्र रो गवर्नर जदि तांको एडिशनल चार्ज दिया हेची एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंड आई मीन जो दादरा एंड नगर हवेली then also he is having that free hand to exercise his functions as a administrator of the union territory okay these are the constitutional discretionary power constitution has given these discretionary power to the governor to take decisions independently then another two is determining the amount payable to the government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to the autonomous tribal district council as royalty. Okay, कौन केते टंगा royalty दिया हबो तांकर जो autonomous council अछि he will decide. Okay, seeking information from the chief minister with regard to administrative and legislative matters of the state. This is also his discretionary power. Okay, and apart from that, like president, he also has situational discretion. जदि कि मेजोरिटी पार्टी रूल नाही ताहले से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करि परिबे ओके डिसमिस करि परिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जदि से माने कॉन्फिडेंस प्रूफ करि पार नाहंती ओके आउ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट द मेजोरिटी ए तीनटा जिंस प्रेसिडेंट को भी थिला okay these are the situational discretions president also has but this constitutional discretions president does not have okay these five constitutional that's all तीन चारटा एठी अछि आर्टिकल मन रखिबो ओके गोटे पार्डनिंग पावर गोटे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एडवोकेट जनरल ओके सो तीन चारटा आर्टिकल इंपोर्टेंट देखि मन रखिबो सो दैट यू कैन मेंशन देम इन मेंस आंसर राइटिंग आ जदी भी तमर आसुची प्रीलिम्स रे सो दैट यू कैन एलिमिनेट करेक्ट